So elastic head-on collision में we are doing numericals. Okay, last class we done case 1, right? चलो उसका बेस में we are doing the questions. So last class we started this one. Tell me, two identical balls are approaching towards each other with 5 meters per second and 10 meters per second. Tell me what will happen. Find the final velocities after elastic collision between them. Sir, What will V1 happen? is -10 and V2 is 5. So when the two equal masses, when they are hitting together, क्या होगा? They exchange their velocities. अगर भूल गए तो आपको V1 फॉर्मूला V2 फॉर्मूला यूज करके फाइनल रिजल्ट तो सेम ही आएगा. ओके, सो आपको अंडरस्टैंड होने का, दोनों इक्वल मासेस व्हेन दे कोलाइड इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन देन दे इंटरचेंज दिस वेलोसिटी. सो ए का वेलोसिटी विल बी 10, E1 is 10 minus 10 meters per second and V2 क्या होगा? 5 meters per second. This is the one we studied, right? चलो ना करो. Three balls A, B, C of same masses are placed on the frictionless horizontal plane. Okay. Ball A is moved with velocity U. U velocity से जा रहा है ball A towards the middle of the ball B. If all the collisions are elastic, then find the final velocity for all the balls A, B and C. क्या होगा? Explain करो. Sir, 0, 0, U. हाँ, understand? बिकॉज इलास्टिकली दोनों सेम मास है. ये जाके हिट करने के बाद क्या होगा? दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल मूव विथ वेलोसिटी u. अगेन दिस टू आर मासेस आर सेम. ये जाके हिट करने से क्या होगा? ये रेस्ट हो जाएगा एंड दिस विल मूव विथ वेलोसिटी u. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? सो 0, इसका 0 0 0 होता है ना बेसिक थिंग. चलो आई करो JEE Mains question. As per the given figure, a small ball P slides down the quadrant of a circle. Quadrant of circle से slide हो रहा है. Hits the other particle ball B. is a Q. Q में particle ball है, उधर hit करेगा. With equal masses. Initially at rest. Initially at rest से ऐसे leave किया. Neglect the friction. Assume the collision is elastic. The velocity of Q after collision is. I'll give options. Understood your question? So it came in 2023 recently. Elastic collision है, दोनों equal masses है. I want the velocity at Q. Sir, 2. No, wait, 1 second. Yeah, 2. देखेंगे. Sir, want it just be 0. Okay, देखेंगे. कोई बोलेगा प्रणव. Sir, 2. Why? 2, tell me, explain करो. Sir, when the ball is moving and hits Q, the ball will have an initial. So I didn't understand. Initial velocity is 0. Okay, then. I use Yeah. root 2gh. When the particle, when you just drop, what is the velocity with which hits the ground? Nothing but root 2gh. So ये मतलब आपको ऐसा करने दो, नो प्रॉब्लम. बट कितना हाइट कवर करेगा टोटली? ऐसा वर्टिकल हाइट कवर का. व्हेन व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? यू यूज root 2gh. मतलब whenever particle is coming from here to and hitting the velocity,
द वेलोसिटी कितना है बोल तो √2gh, ये यूज करो, कितना आएगा √2gh बोल तो, इज अ क्वाड्रेंट राइट, इसका इसका Two. सेम, so it will be velocity is 2 meters per second if it's upshoot, gh is Oh. 0.2 meters, लगाए तो ये आएगा. Since it is elastic collision, ये exchange velocities, so जो velocity से 2 meters per second इसको इधर इसको दे देगा, this will become a rest and this will be moving with कितना 2 meters per second. ओके, मुझे में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने का. आपको जीरो क्यों आया ऐसे, u is No, sir, 0. I thought that U was 0. That's why it will hit it with 0. sir. ऐसे मत करो, जेई मेंस में अच्छे से करो क्वेश्चंस, दे विल थिंक सो मच एंड दे विल गिव. ओके, नाउ केस 2. केस 2 क्या है, सपोज मान लो व्हेन m1 is much less than m2, m1 is much less than m2 and u1 is u and u2 is 0, second body is at rest. देखो m1 इनिशियली इसका वेलोसिटी इज u, सेकंड बॉडी इतना बड़ा बॉडी है, m2 का बॉडी रेस्ट में है बिफोर कोलिजन. ये जाके हिट करने के बाद क्या होगा, इफ यू सबस्टिट्यूट द वैल्यूज इन v1 v2 फार्मूला में, यू विल गेट फाइनली इट इज -u आएगा, m1 is -u and second body is still at rest only, still Sir, at rest. won't it be reverse? Won't U1 be 0? u1 will be 0. Why? Because the दोनों mass is सेम very मासा, small, right? सेम मासा. केस 1 इज ओनली फॉर सेम मासेस, ये सेम मास नहीं है वाला. ये क्या होगा, छोटा मास व्हेन यू हिट द बड़ा मास, so ये फाइनल बड़ा मास विल बी रेस्ट ओनली एंड द छोटा मास विल मूव विद ए -u स्पीड. यू कैन रिमेंबर लाइक दिस. कैसा, साइकिल एंड ट्रक, अगर साइकिल आकर ट्रक को मारेगा, व्हाट विल हैपन, ट्रक को कुछ होगा, ट्रक रेस्ट में है, साइकिल आके हिट करेगा, ट्रक इज रेस्ट, बट साइकिल विल मूव विद बैकवर्ड्स -u के साथ, वो याद रखो ऑलवेज. ओके, सो फाइनली v1 विल बी -u, v2 इज 0. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला में फाइनल रिजल्ट विल बी कमिंग दिस वन, बट केसेस जैसे रिमेंबर किया तो आपको इजी हो जाएगा. ओके, नाउ रिवर्स करेंगे. केस 3 देखो, व्हेन m1 इज मच ग्रेटर देन m2 एंड u1 इज u एंड u2 इज 0. देखो नाउ ये ट्रक आकर साइकिल को मारेगा, देन क्या होगा, साइकिल रहेगा, साइकिल विल मूव विथ ए डबल द वेलोसिटी ऑफ दिस वन, 2u जाएगा. ये कितना वेलोसिटी u से आ रहा है ना इनिशियली, वो हिट करने के बाद 2u में जाएगा, एंड दिस विल बी कंटिन्यूइंग विथ सेम वेलोसिटी. दैट्स व्हाई v1 इज u, v2 इज 2u. साइकिल विल गो विथ डबल द स्पीड, ट्रक आकर मारेगा ना, वो डबल स्पीड में जाएगा एंड ट्रक का स्पीड तो कांस्टेंट है, ट्रक का स्पीड कुछ नहीं होगा u. So this cases remember karo, and these cases when the second body is at rest only, if the given बड़ा masses है बोले तो moving वाला masses को we cannot use this formula. This formula is useful only when the second body is at rest. ये वाला second body rest, छोटा होने दो बड़ा होने दो, rest हुआ तो then only we can use this one. So only 3 cases, that's it. Copied? Yeah. Yeah. चलो, राइटिंग है प्रणव, लिखो अच्छे से, अगेन लास्ट में कंफ्यूज हो जाएगा. Yes, sir. यस, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका बेस में, ऑल केसेस में मिक्सिंग टुगेदर. सी वी कैन यूज एनी कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द थिंग्स. जेई मींस क्वेश्चन एसोसिएशन रीजनिंग, मतलब रीजन करेक्टा वगैरह फॉल्सा, यू नो राइट. So both are true, and R is the correct explanation. क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा.
Question studied, Sir. Sir, I'm meaning R is not the correct explanation. Wait, yeah, R is correct explanation only. Yeah. Krish, आप question पढ़ो. A body P having mass capital M moving with speed U, head-on collision elastically with another body Q hit कर रहा है. Initially M is initially at rest and बड़ा mass is much greater than small mass. मतलब truck and cycle. Okay. Sir, A and R are true. I don't know if it's a reason or not. देखो ये आपको V1 V2 कैसा है डेरिवेशन में टेल में V1 V2 कैसा है V1 फॉर्मूला V2 फॉर्मूला कैसा है आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज करके ओनली वी गॉट दिस वन राइट Yeah. and that condition if I substitute in this only we are getting this V1 and V2 का double the speed बोल के so during elastic collision the momentum and kinetic energy of both are conserved then only we got this formula then only if you substitute this one we'll get double and speed so these are the correct explanation okay sure ना करो बॉम्ब वाला क्वेश्चन है A bomb of mass 16 kg at rest explodes into two pieces of masses 4 kg and 12 kg. The velocity of 12 kg mass is this much. The kinetic energy of the other mass is just kinetic energy. This all comes under collisions only. कुछ नहीं. (16 kg bomb explodes into two pieces, 4 kg and 12 kg. So it's not kinetic energy. 12 kg velocity is given as 4 meters per second. Definitely, yeah. So I got 288. देखेंगे. So even I got 20. Yes. Sir, 1 second. देखेंगे. Answer may be wrong. So kinetic energy of the other mass means of the 4 kg mass. Yes. Yeah, sir, 288. बिकॉज मोमेंटम आपको इनिशियल जीरो है ये पार्टिकल किधर जाएगा मालूम है किधर जाएगा फर्स्ट स्टेल में इट विल गो लेफ्ट साइड और राइट साइड दिस 4 kg मास इनिशियल मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड राइट सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो ये पार्टिकल मान लो इज गोइंग राइट साइड दिस पार्टिकल विल गो लेफ्ट साइड डेफिनेटली बिकॉज दोनों कैंसिल होकर फाइनल मोमेंटम आल्सो शुड बी जीरो सो सिंपली इक्वेट द मोमेंटम्स सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम इक्वेट किया तो विल गेट वेलोसिटी वेलोसिटी कितना है वेलोसिटी हाउ मच you got as 12 meters per second. Now you can use kinetic energy formula. Kinetic energy is half mv square. M is 4 kg. If you substitute, you will get the value 288 joules is answer. Right? Chalo. करो. एक रबर बॉल है फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h एंड रिबाउंड्स अप टू हाइट h/2 एक हाइट h से a rubber ball is falling okay and rebounds to a height h/2 the percentage loss of total energy of the initial system as well as the velocity of the ball before it strikes the ground मतलब before it strikes the ground velocity भी चाहिए and इसका टोटल लॉस ऑफ टोटल एनर्जी भी चाहिए सो ऑप्शन विल गिव The velocity they're asking after it like strikes the ground after it goes to h. first one before it strikes the ground like you know first step में First time will be root 2gh only. okay दोनों options are there Say 50%. अब why 40% doesn't make sense. I see. The options are 50%. The wrong answer wrong
That's correct, sir. I'm positive. देखेंगे माना टेल द परसेंटेज लॉस, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, दोनों सेपरेट करो परसेंटेज लॉस. So will the velocity be the same only, right? Velocity will be same. Why? Sir, then I got 50% See, root 2 velocity GH. formula will be same, root 2 gh and upper root 2 gh. But here h is h by 2, right? So it's become root GH. So it'll be 50. Root 3h. Why 3h? Sir, but then they're asking before it strikes the ground, right? So won't velocity just be root 2 GH? Not h by See, 2. Sir, one it's answer 50% root 2 GH only. देखेंगे. बनो प्रणव बोलो. Sir, then I got 50% root 2 GH. Why? Tell me, explain करो. So, because total energy is mgh plus half mv square, where v square is 2 gh. So you get 2 mgh, and total energy of the h by 2 is mgh by 2 plus half mv square, v square is root gh. Yeah. So, sir, See, total energy is mgh, so change is 50%. see, Krisha, देखो velocity का formula under root 2 gh, right here. And इधर इसका velocity कितना होगा? V dash कितना होगा? V dash is under root 2 Root g GH. h is h by 2, right? So root gh. Now find final kinetic initial kinetic energy कितना होगा? Kinetic energy is equal to half m v square means 2 gh. To cancel mgh. And इसका kinetic energy कितना होगा? Half m v square. V square is gh. Sir, I just use potential energy. Yes. So now आपको सब परसेंटेज है ना, परसेंटेज बोलते तो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, क्या तो विल गेट द परसेंटेज विच इज 50%. दिस आंसर, राइट? आंसर आया. सो मेथड से सीखो, आंसर का इंपॉर्टेंस नहीं है, मेथड सीखो so that any complicated questions also if they Sir, but sir, it just sounds like JEE Main exam, instead of doing all this, if we just use the logic which we used, we would have gotten the same answer only. ओके, बट मेथड सीखे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आ गए तो प्रॉब्लम, सडनली ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिए तो प्रॉब्लम. चलो, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट, इलास्टिक 2 dimension question. Okay, 2 dimension question. Till now we studied only head on head वाला. Okay, 2 dimension करने वाला. देखो 2 dimension में क्या होगा? एनी फॉर्मूला 2 dimension में? एनी फॉर्मूला याद है कुछ फॉर्मूलास? So probably the same thing in vector form. वेक्टर फॉर्म, नो, रॉन्ग. देखो So what does 2 dimension mean? Like with E? मतलब अभी तक क्या था, ये जाके हिट करने के बाद एग्जैक्टली स्ट्रेट पाथ में एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. अभी इट कैन गो इन एक्स वाई प्लेन एनीवेयर, लाइक कैरम बोर्ड का. एक कॉइन हिट किया तो क्या होगा? दूसरा कॉइन जाके ये इधर जाएगा, एक इधर जाएगा. सेम पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, एक स्ट्राइकर एंड द कॉइन. ये स्ट्राइकर इधर जाएगा, कॉइन इधर जाएगा. ऐसा दैट इज कॉल्ड 2 dimension. Formula, sir. फॉर्मुलास, हाँ, फॉर्मुलास बोलो. There's no formula, so you'll just take X component and like That's it. There is no formulas in this. Okay, chalo. M1 is moving with velocity u1 plus M2 is moving with velocity u2. Okay, ये जाके हिट करने के बाद क्या होगा? ये 2 dimension में जाएगा. So M1 may be going with velocity v1 with an angle alpha. This is a line of action. And M2 can be going with velocity v2 with angle beta, मान लो. Okay, now what is the method we have to follow? Like this they'll give question. So how to method? Any collision में what is same? Conservation of momentum is same. So you apply momentum in x direction separately, y direction separately. X direction momentum बोलो. Initial momentum in x direction is equal to final momentum in y direction. X direction. नो सॉल्व करो. x direction में क्या होगा? Momentum m1 u1 प्लस ये भी x direction है ना, m2 u2 is equal to final momentum in x direction. So इसका कंपोनेंट निकालो. So m v1 cos alpha momentum प्लस ये कितना होगा? m2 v2 cos beta. दिस इज फर्स्ट स्टेप. ओके, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. ओके, सिमिलरली सेकंड स्टेप क्या है? वाई डायरेक्शन में अप्लाई करो. इनिशियल एक्स वाई इज इक्वल टू फाइनल वाई डायरेक्शन. सो वाई डायरेक्शन में देखो इनिशियल मोमेंटम 0 है,
फाइनल मोमेंटम इज 0. समझ में आ रहा है? बिकॉज देयर इज नो वाई डायरेक्शन मोमेंटम. एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इधर लगाओ, इधर क्या होगा? एम v1 m1 v1 साइन अल्फा. इसका कितना होगा? इसका कितना होगा कंपोनेंट? v2 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? माइनस आएगा m2 v2 साइन बीटा, बिकॉज डाउनवर्ड्स है ना, डाउनवर्ड्स में माइनस लगाने का. सो दिस इज सेकंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप में यू नो इलास्टिक कोलिजन ही टोल्ड, राइट? इलास्टिक कोलिजन मींस आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सिंपली इक्वेट काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to final kinetic energy half m1 v1 square plus half m2 v2 square. See, when you are applying kinetic energy, don't again take some components का वगैरह नहीं है. Final kinetic energy, particle resultant velocity किधर जा रहा है, उसका kinetic energy we are taking always. Okay. So these three steps use करके you can solve any numerical based on this. Sir, why is the initial potential energy in y direction 0? देखो मोमेंटम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मोमेंटम. मोमेंटम Sorry. हाँ, मोमेंटम ओनली इन एक्स डायरेक्शन इज देयर, वाई डायरेक्शन नहीं है. इट इज गोइंग एक्स डायरेक्शन ओनली. Oh, yeah. हाँ, दैट्स व्हाई. Sir, in हाँ momentum in y direction, why हाँ is it m1v sin alpha minus m2v to sin हाँ, beta? देखो when you take the components like Yeah, this and good like luck. this, right? Downwards negative axis. So by using sign conventions we have to follow this one. So if Chalo. it's not going to the negative side, you'll take positive only. Which one? For V2, हाँ if like both of them are going, हाँ, positive direction means yeah, हाँ. positive. Yeah. चलो, numericals करो based on this. करो. A billiard ball moving at a speed of 2 meters per second strikes an identical ball initially at rest. At a glancing blow, मतलब nothing but certain angle. ऊपर head on, ऊपर मारा थोड़ा. Exactly head on नहीं है. Indirectly glancing blow बोल तो. Okay. Now what will happen here? After the collision, the ball found to be moving with 1 meters per second at 60 degrees with the original line. The velocity of the other ball is. Okay. So what is saying? Two identical balls है, मतलब mass So same. here they only gave like alpha or beta. They didn't give the other angle, right? बीटा नहीं दिया, अल्फा दिया. Yeah, so they didn't give the other angle, right? हाँ, So use the concept and that's it. वही out of these three relations use किया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. Okay. हाँ. Yeah. So second body क्या हो? Same mass है. Second body is at rest. It is hitting at glancing blow, मतलब certain angle में थोड़ा ऊपर हिट हुआ. Exactly head on नहीं है. ऊपर हिट करने के बाद क्या हुआ? The 1 meters ये कितना speed of the first particle is going with 1 meters per second at an angle 60 Sir, I degrees. got 5/2. And second mass No, wait. किस तरफ जाएगा? Can you tell me first of all? A second mass should go in which I direction? mean, it won't even move, right? Will not move. Why? Sir, I got 3.5. ये हेड ऑन नहीं है, मानो ऑब्लिक वाला. ओनली हेड ऑन कोलिजन्स में ऐसा होगा. ओके. लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला दोनों एग्जैक्ट टच हुआ तो देन ओनली दिस विल हैपन, रेस्ट में रहेगा वगैरह. ये ऐसा नहीं है. हाँ, ये दिस विल गो इन दिस. देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इन टोटली इन एक्स डायरेक्शन ओनली. फाइनल मोमेंटम आल्सो शुड बी इन एक्स डायरेक्शन. नाउ इधर देखो, इधर एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है. सो दिस हैज टू गो सच ए वे दैट वाई डायरेक्शन शुड बी कैंसिल्ड. सो इट विल गो इन द एक्स डायरेक्शन. Why? Certain angle theta. Why? It will be x component is getting added and y component is getting cancelled. Total momentum should be in x direction only. समझ में आ रहा है? हाँ, now Yes, solve sir. करो. Now apply x direction, y direction, momentum. Find theta and v also. Also, we can find theta by using y component, right? हाँ, use करो. Any component, take and tell answer. Since is elastic collision, one is any collision, initial momentum equal final momentum always. Use the concept.
x direction, y direction separately, and find theta. So mass is same, no? Mass is same. Mano, bolo. Apply concept. Initial momentum in x direction is equal to final momentum in x direction. So इसका momentum कितना होगा? X direction में काउंट करो. इसका 2m 2m plus इसका 0 is equal to final momentum x direction में m cos m into 1 cos 60 mass velocity plus m v cos theta, right? So pura m Yeah. m cancel. So 2 is equal to cos 60 is 1 by 2 plus v cos theta. So कितना होगा? 2 minus 2 by 1 by 2 is how much? 3 by 2. yeah 3 by 2 is equal to v cos theta. First equation, right? So root 3. Root 3. Yeah. Answer कितना है? V is how much? You got root 3. Theta? Theta is 30. Yes, correct. Now same way, if you apply for y direction, p initial y is equal to p final y. मानो you're getting a final momentum देखो, इसमें y direction में momentum is 0. There is only x direction, y direction नहीं, इसमें भी 0 है. So 0 is equal to y direction, इसका कितना होगा? m into 1 sin 60. ये वाला नीचे है ना? So minus m into v sin theta. So m cancel. So क्या होगा? Sin 60 is root 3 by 2 minus root 3 by 2 cancel हो जाएगा. So root 3 by 2 is equal to v sin theta. Now if you divide, you'll get the 1 and 2. If you divide, you'll get the theta as 30 degrees. Now substitute in any equation. Solve किया तो we'll get the value of v, which is root 3. आया? So Sir, 2 day. हाँ. So won't it be root 3 equal to v sin theta? Because Root isn't 3, it mv? Oh Oh, no, no, for the m sin 60. m Isn't sin it- 60. So if V- I got into 2, right? No. I am applying upper one का 1 into m sin 60, right? Mass Oh, velocity. नीचे का नहीं है. yeah. नीचे का mv. So if you divide, you will get tan theta आ जाएगा. Theta is 30. If you substitute any one equation में, you will get v equal to root 3 meters per second. So 2 dimension में आपको simply conservation of momentum और kinetic energy initial equal to kinetic energy final use करेंगे. That's it. yes sir got it. चलो next ये करो. Two spheres A and B of masses m1 m2 respectively collide है. A is at rest initially, B is moving with velocity v along the x-axis. Okay. Now after collision, B has velocity v by 2 in the direction perpendicular to the original direction. No question, tell me. What is saying? A is at rest initially, A rest है. इसका मास है, A का मास is m1, right?
A का mass is m1 at rest है, and B is moving with velocity v. A B है which is m2 mass, it is moving with velocity v. Then only collision will happen. If you reverse किया तो collision नहीं होगा ना, along the x direction. After collision, B has velocity v by 2. So m2 Sir, is it will moving move along the v y by 2 in the direction. direction perpendicular to origin, मतलब ऐसे जा रहा है v by 2. हाँ, then m1 किस डायरेक्शन में जाएगा? The negative y direction. ऐसा? Yeah. Why? Sir, because it has to balance it. बैलेंसिंग करने में देखो, आपको दोनों नीचे गए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा. Yeah. नो, आपको एक्स डायरेक्शन मोमेंटम है ना, इनिशियल एक्स डायरेक्शन मोमेंटम इज देयर, फाइनल आल्सो आपको एक्स डायरेक्शन मोमेंटम रहने का. Oh. हाँ, सो उसके लिए Sir, I got आपको cot inverse 2. हाँ, I got cot inverse 2. ओके देखेंगे. चल में m1 किधर जाएगा बोलो, इधर समझ में आएगा. m1 हाँ किस तरफ जाएगा? टू कैंसिल, बोलो माना. आपको सर्टेन एंगल में गया तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन भी रहेगा कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन भी रहेगा, वाई डायरेक्शन गेटिंग कैंसिल, एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम रहेगा. सो आपको इस तरफ जाएगा, यू कैन कॉल वी डैश. ओके, now try to find the sphere A moves after collision in the direction, is asking theta, that's it. कौन सा कितना एंगल में गया है तो the momentum will be conserved. Same method, x direction y direction equate करो and get the angle. So what is this? Oh, E by okay, okay. Okay, fine, got it, understood. Rest में So can't we take one angle as theta 90 minus theta? नहीं ऐसा मत ले लो. So but they didn't even give any angle in particular. So both the angles you have to find right then. वही एंगल उसका क्यों एक y डायरेक्शन में चले जा रहे हैं ना. सो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन. इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन इज हाउ मच, m2 into v, ये तो जीरो है, इज इक्वल टू x डायरेक्शन में और कुछ नहीं है इसमें, तो x डायरेक्शन में नहीं है, ओनली इसका क्या होगा, m1 v डैश cos थीटा, राइट. फर्स्ट इक्वेशन. नाउ p1 pi y इज इक्वल टू p फाइनल y. y डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो जीरो है, इज इक्वल टू इसमें y डायरेक्शन क्या होगा, m2 v by 2. ओके, एंड इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन का माइनस m1 v डैश So cot साइन inverse थीटा. 2. हाँ, tan में बोलो. सो Tan is- नो, Tan is 1 by 2. हाँ tan इनवर्स 1/2 आंसर. नाउ फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, आपको सॉल्व करो, मानो करो. Yeah. So again it would divide only. डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज m2 v कैंसिल हो जाएगा, m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, v डैश आ जाएगा. सो इसमें क्या है, इधर क्या होगा, ये भी इधर लेके आए तो m2 v by 2 is equal to m1 v dash sin theta. नो, सेकंड बाय फर्स्ट करो, क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, sin theta by cos theta is tan theta, and ये 1/2 m2 m2 कैंसिल, v कैंसिल हो जाएगा 1/2. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है. Yeah. करो. JEE मेंस क्वेश्चन है. A particle of mass m with a initial velocity ui, मतलब x डायरेक्शन में जा रहे हैं, collides perfectly elastically with mass 3m at rest. It moves with a velocity, one velocity will go in j cap, then the velocity will be, other particle का velocity is how much.
This is like V J cap, do they mean? Yes. So Student. will you get a number or will you get in terms of UI? So you will get in terms of U. So they asked V1, right? If they gave V2. A new particle का velocity कितना होगा? A So of particle the है, it is particle moving of with mass velocity M, U. right? Wait. Collides with perfectly elastic of 3m mass, which is at rest. No, sir. Did they ask us to find V1? V1 is what you're taking? No, I took the first mass as U. He has given it is going V, right? V in Z direction, Y direction, right? So V1 is asking. Second one, V1 is asking, yeah, indirectly. So here after that, क्या होगा? So I got Yes. UI only. V in terms of U same, huh? Yes, sir. That's what I'm getting. No, Sir, how will we not get theta on this? not get theta na. Like, देखो, how will we get theta? it Then how goes will with we? Sir, shouldn't we get theta in the answer? no theta आंसर नहीं है. देखो, understand Okay, करो. okay. देखो, mass m is moving with like this and 3m mass किधर जाएगा? 3m mass first tell me diagram. माना बोलो 3m mass किस तरफ जाएगा? Total momentum initially is totally in x direction only. Yeah, Final momentum should be also in x direction. X direction. ये y direction तो दे दिया, right? आपको ये कैंसिल कर देने का, only x direction रहने का. So definitely it has to go with certain angle. And in the slanting direction only. Standing direction में जाएगा. Okay, v dash मान लो. But now I will split into instead of theta नहीं है ना, so मैं क्या करूंगा? इधर vx डालूंगा, vy डालूंगा, right? vx vy. now try करो. Initial momentum will final momentum. Under root v square plus u square by 3. Answer, huh? I'll give you options. Try to do. V is equal to under root 2 by 3u. V is equal to 1 by root 6u. V is equal to u by root 2. V is equal to u by root 3. 2020 JEE Mains question. करो, try करो. See, V in terms of you are getting under root u square plus v square by 9, right? मुझे V चाहिए ना in terms of u. अंदर root में भी V है. No, sir, the normal v is there. Oh, you want v, V only. not v dash. V in Okay. terms of u. Sir, won't you get first equation as mu I cap is equals to mv j cap plus 3mvx? देखो, I cap J cap छोड़ो. पहले इनिशियली देखो डायरेक्शन तो लगा देना x डायरेक्शन y डायरेक्शन में. So you get mu is equals to mv plus 3mvx. mu is equal to mv 3mvx. plus 3mvx. Again, इधर क्यों आएगा? इधर तो y डायरेक्शन है ना. See, x direction when you are using. Oh my god. x direction use करो. So here mu इसका तो रेस्ट है is equal Is equal to 3mvx. 3mvx. Okay, cancel.
So So the Vx second one you'll get mu sin theta is equal to 3m थीटा vy. थीटा छोड़ो, थीटा का अभी नहीं है ना, थीटा नहीं है ना, फिर से क्यों परेशान करने का. सो वी वाई ले लो, हो जाएगा. सो वाई डायरेक्शन में ले लो, इसका वाई डायरेक्शन 0, राइट. So you get Vy is equal to V by 3. एम वी कितना माइनस 3m वी वाई Yeah. क्या गया. सो एम कैंसिल हो जाएगा. सो वी वाई इज इक्वल टू V by 3. वी बाई 3, राइट. नो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, वी कितना होगा, वी डैश अंडर रूट द स्क्वायर प्लस स्क्वायर. सो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 9, राइट. Yeah. हाँ, वी डैश आया, ठीक है. बट आई वांट वी इन टर्म्स ऑफ यू में चाहिए. वी में यूज द कैंडी रिलेशनशिप यूज करो एंड सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन दैट. कैंडी का क्या है, इनिशियल कैंडी इज इक्वल टू फाइनल कैंडी. तो इनिशियल कैंडी समझ, हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो 0 है, प्लस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3m v dash square, right. So half m cancel, half m half m half m. So क्या बचेगा, u square is equal to v square plus 3 times of v dash. v dash की जगह में ये सब करो, v dash square कितना होगा, रूट निकल जाएगा, u square plus v square by 9. Now bring all one side and find v is equal to how much. So you got u by root 2. Yeah, u by root 2 is the answer. है 2020 में ऐसे देगा, मतलब कैंडी का यूज करने इधर इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है. यू सिंस यू गॉट यू एंड वी टर्म्स में, मुझे क्या चाहिए, वी इन टर्म्स ऑफ यू चाहिए ऑप्शंस में. सो मतलब वी डैश को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग कैंडी कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट करो. To the 19, I'll give options. Try. Particle of mass m is moving with 2v, collides with 2m mass of speed v in the same direction. After collision, the first mass stopped completely, while second mass splits into two particles of mass m and m 45 degrees with respect to original. The speed of each particle. So by next class will we do inelastic? हाँ, हो जाएगा. Till coefficient of restriction, we'll try to finish completely. Yeah, sir, because we only have to there for exam. Yeah, till there only will do. वो इजी है, यही थोड़ा बड़ा है, और मैंने कुछ नहीं है. स्मॉल किड्स प्रॉब्लम्स. So both are moving in x direction or y direction? कौन सा, x direction only. Okay. You don't mention this, x direction ले लो आराम से. So v speed collides with 2m mass moving with v in the same direction. After collision, the first mass will be at rest and second mass splits into two particles each of mass m. So second particle is splitting, m is going with 45 degrees and this also m is going with 45 degrees. Sir, they said
Oh no, man, I got it. Understood what to do. And speed of the original particle is how much? So v1, v2. Sir, I got 2 root 2v. 2 root 2v देखेंगे. So I'm getting root 2v. Okay, देखेंगे. Sir, it's 2 root 2v. Oh wait, it's 2 root 2v. Yeah. 2 root 2v. अरे पक्का ना? Yeah. Yeah. Yes, this answer. 2 root 2v. Okay, चलो. सेम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगाओ एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में लगाओ, हो जाएगा. एंड वाई डायरेक्शन में लगाने से एक्स डायरेक्शन में लगाने से क्या होगा, वाई डायरेक्शन में लगाने से क्या होगा. वाई डायरेक्शन लगाने से आपको समझ में आएगा कि b1 b2 विल बी सेम, देन सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा. ओके. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 21. So is the theta, sir, will the theta be Vx by Vy? If we Vx find by Vy. If you're applying tan theta, opposite by adjacent. So Vy by Vx if you want. Vy by Vx. Vy by Vx. The second piece starts moving. I got 30 degrees. How much? 30. Why 30? So if you get, I got Vx and Vy value and then I use tan theta equal to Vy by Vx. देखेंगे. The given here क्वेश्चन थोड़ा wrong है. The second piece का velocity भी दे दिया. Second piece का splitting के बाद 20 meters per second से जा रहा है speed, which is x axis. Speed 20 meters per second at an angle theta. Either 20 meters per second लिखो. Moving the speed of 20 meters per second at an angle theta with respect to x axis. मतलब this speed is given after splitting 20 meters per second. So but But also you can find also, no problem. But sir, I got 30. So still 30 degrees. yes, 30 degrees answer. Same 30. Yes. So but it doesn't matter. I mean, yeah. मतलब आपको सिंपली ऐसा भी डिवाइड करके इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लगा कर सकते हैं, थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं. बट थीटा जनरली डायरेक्टली आ जाएगा ना. आया 30 डिग्रीज. So generally, if you do without, you'll get Vx as 10 root 3 and Vy as 10. Hmm. Which is all. Yeah.
सो समटाइम्स थीटा का अगर बार नहीं दिया तो यू कैन स्प्लिट इनटू वीएक्स एंड वीवाई, इजी हो जाएगा आपको. ओके, चलो नेक्स्ट. Select both the balls to individually make 30 degrees. Yes. Nine meters per second strikes an identical ball at rest, such that after collision, the direction of the ball makes 30 degrees with the original line. Find the speed of the two balls after collision. Sir, won't both the balls move with same speed? Yeah. So I got 3 root 3. So, हाँ 3 root 3. देखेंगे. कितना So question? 3 root 3. Yes, this answer. So 1 second. Yeah, करो. I say look at v equal to b dash here. Hmm. So 2v is equal to 6. Yeah, 3 root 3. Yes. चलो next we have to go for inelastic collision. Inelastic collision के बारे में बोलो, क्या क्या है? What does the meaning of inelastic collision means? I didn't write it down, sir. उसका kinetic momentum क्या होगा? Conservation रहेगा compulsory. Okay, but kinetic energy will change. देखो इसका points देखो. A collision where momentum is conserved but kinetic energy is not. Kinetic energy is not conserved. Such type of collisions is called as inelastic collision. Okay. समझ आ रहा है? हाँ, kinetic energy is not conserved means what is the meaning that mean? Initial kinetic energy is equal to final kinetic energy in this में? Tell me. No. No. So देखो momentum तो conserved है. I told you any collision में momentum is conserved. देखो some of the kinetic energy is converted to other forms of energy such as heat, sound and deformation. The total kinetic energy decreases. So when I draw the kinetic energy for a inelastic collision, the kinetic energy decrease होता जाएगा because energy is getting lost. Such type of collision is called as inelastic collision. Generally इसका आगे आएगा ना, E value is greater than 0, less than 1 in inelastic collision. E value lies between 0 and 1. Sometimes questions में आपको E value 1/2, 3/4 ऐसे देगा. So you should be very careful. Inelastic collision बोल के मान सकते हैं. E equal 1 है तो E के बारे में लर्न करेंगे, but E equal 1 है तो which one? It will be elastic. Inelastic collision. E equal 0 means It will be, so then it will Inelastic. perfectly inelastic. perfectly inelastic वाला. And between वाला normal elastic वाला, inelastic वाला, right? Sure. Sir, for elastic, E is equal to 1. For perfectly inelastic, E is 0. 1 second. Coefficient of restitution आगे आएगा. For elastic, it's 1. Inelastic, perfectly inelastic, 0, and inelastic between them. Between 0 and 1. Okay. चलो.
Now example देखो, car accidents where vehicles crumple, losing kinetic energy to deformation. So some of the energy is getting lost. Initial kinetic energy is more than final kinetic energy. Okay, these are inelastic collision. Next one लिखो, perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic बोले तो क्या है, same thing, right? So is it आपको the so will the same formula be used for all, that नहीं, V1 equal to V1 वाला वो नहीं है, because E value will they will give like 1/2 3/2 देगा ना. आपको क्या करने का, दो मेथड है. वन इज थ्रू फॉर्मूला कर सकते हैं, वो विच विल गिव आगे का. एंड दूसरा, और सिंपली मेथड से कर सकते हैं. कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के ई का फॉर्मूला यूज करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली. ओके, सो फॉर्मूला नहीं आए तो भी नो प्रॉब्लम, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं एंड ई वैल्यू लगा के सॉल्व करो, आ जाएगा. दोनों को इक्वेशन से आएगा, सॉल्व किया तो आ जाएगा. ओके, perfectly inelastic एकदम. A special type of inelastic collision where colliding objects stick together after the collision. Very important. आपको क्वेश्चन में they will not give mention it is perfectly inelastic. By seeing you should understand that दो पार्टिकल कोलाइड होने के बाद दोनों स्टिक करके जा रहे हैं. That is called perfectly inelastic collision. And the maximum amount of kinetic energy is lost and the object move with common velocity after collision. So maximum kinetic energy इसमें lost हो जाएगा एंड दोनों मिलके मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी. कैन यू गिव एग्जांपल वेयर दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी? एन एग्जांपल, मतलब डोंट टेल लाइक चपाती ऐसा मिक्स कर देता, ऐसा नहीं है. यू टेल द एनी एग्जांपल वेयर टू पार्टिकल्स कोलाइड करके विद कॉमन वेलोसिटी से जाएगा. so can you give a clue? क्यों एग्जांपल बोले तो जनरल एग्जांपल, एनी एग्जांपल कैन. दो ऑब्जेक्ट्स जाएगा आएगा, ये हिट करेगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, विल मूव विद कॉमन Two वेलोसिटी. cars crashing. क्रैश करके दोनों साथ साथ जाएगा, इट विल गो लिस्ट. ओके, बट जनरल अदर इन एग्जांपल कुछ बोलो एग्जांपल. ओके, नहीं तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल, बुलेट इन द ब्लॉक में. अब बुलेट जाके हिट करेगा, ब्लॉक के अंदर रुक जाएगा एंड दोनों विल मूव विद द सेम वेलोसिटी. ओके, सो दिस How इज will the block move? हाँ, How will the block move? भाई आयरन ब्लॉक है, हिट किया तो क्या होगा, वो बुलेट बुलेट जाके हिट करेगा, Oh, like इंसर्ट हो that. जाएगा. Okay, okay, got it. हाँ, so that is by seeing question you should understand that it is a perfectly inelastic collision. Both will move with a common velocity. Okay, two lumps of clay colliding and sticking together. देखो, दोनों clay आकर stick होके दोनों move with a common velocity. That means m1 is moving with velocity u1, m2 is moving with velocity u2. combine हो जाएगा दोनों मिलके m1 plus m2, दोनों moving with velocity v. This is nothing but inelastic collision. Perfectly inelastic. So kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. So, sir, Maximum for kinetic energy is lost in this. so sir, for this V1 and V2 will be the same only. U1 U2 V1, V2. हाँ, yes, दोनों will be same in this. Common velocity से जाएगा. चलो, हम बेसिक एग्जांपल्स लेंगे. इनइलास्टिक भी हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा. करो easy example. A moving body of mass m and velocity 3 kilometers per hour collides with the rest body of mass 2m and stick to it. Now the combined mass start to move. What will be the combined velocity? I want velocity in kilometers per hour only. Sir, 3 only. Wrong. Question diagram draw करो. Oh, it's rest. Oh my God. A Sir, one, moving one, one, body. one, 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 one. देखेंगे इनको भी होने I दे. forgot to say rest. Okay. It moving with velocity 3 kilometers per hour collides with the rest body of 2m mass and stick together. मतलब 3m mass I want with a velocity, one. velocity so much. Yes. So here any formula we are using, simply initial momentum equal final momentum, because Conservation. any collision में momentum का conserved. Okay. So समझ आ रहा है? 3 into m is equal to 3m into v. So v is equal to 1 kilometers per hour. Okay. Draw the diagram. Answer.
Coalesce means stick only. They'll mention. So they don't coalesce. Covalence means mix only. Yeah. A particle of mass m moving eastwards with velocity v. एक particle है, is going with eastwards with velocity v. Collides with another particle of same mass moving northwards with the same speed v. The two particles coalesce, so 2m mass. On collision, the new particle 2m will move with a northeast direction. So technically, answer should be V only. But if I take components, you'll get V root 2. इसका yeah, इसका कितना है? Asking the new particle of mass will move with a velocity of what? Have you options? So won't it be root 2V? Oh, देखिए. not option, huh? हाँ. कृष्णा, ये भी 2 डायमेंशन जैसे है ना? सॉल्व करो. 2 डायमेंशन. So here no theta, directly you can take Vx, Vy करके आपको net speed we can find, net velocity you can find. So this is Vx, this is Vy. So net speed find करो. Sir, V by root 2. V by root is answer. Sir, I have a doubt. So for inelastic and perfectly elastic, the first two cases will satisfy. What? Like the PI, the initial momentum, final momentum, and the In initial momentum. any collision में, in any collision momentum is conserved. Okay. And kinetic energy वाला starting में क्या है? Initial kinetic energy equal to final kinetic energy. But इसमें initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. No, sir, the other part as well. Other part means inelastic collision. That one. The 0 equal to m1 v1 sin r. Oh, wait, you can't use that though. मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं एनी डायरेक्शन में. ओके. आया आंसर कितना है? प्रणव, हाउ मच गॉट? So V by root 2. यस आया. यस. Yeah. तो सिंपली आपको क्या करने का, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करो, विल गेट द आंसर. उसका रिजल्टेंट विल बी द Oh, I get v by 2 and v by 2. यस. उसका सिंस 45 डिग्री से ना v by root 2 आएगा. I want in terms of I cap and J cap answer no. A particle of mass m horizontally moving with velocity v collides and sticks to mass 3m moving with upward direction with the velocity 2v. yes, मतलब आने के बाद 4m हो जाएगा. The final velocity of the combination is किस तरफ जाएगा? We don't know that. Sir, I got it. Sir, I got 1 by 4. I mean, v by 4 I cap plus. 1 second. So do you want in terms of 3 by 2 triangles? j cap. क्या? V by 4 I cap plus 3 by 2 j cap. Yes, So correct. do you want the answer? You just given it the work power energy thingy, I think. Yeah. Aparna, something you're telling? So do you want in terms of like angle or do you want the value of Vx? No, I and want Vy? in terms of I cap, J cap. So Vx is V by 4 and Vy is 2V by 3V by 2. Yes. आया कृष्ण आपको? Sir, I'm finding the angle. या फाइंड करो. एंगल जरूरत नहीं, वही उसमें मत फंसो एंगल का. Vx Vy ले लो. Options are in I cap, J cap. So initial momentum x direction equal to final momentum x direction.
सो इनिशियल मोमेंट में एक्साइटेशन कितना है, mv plus 0 is equal to 4m. Sir, won't we get it in terms of V? Yeah, I cap j cap बोलो sit. So vx is equal to v by 4. So v by 4 I cap. सिमिलर बाई डायरेक्शन में And then Y direction is 6V by 4 J. हाँ सिंप्लीफाई कहते हैं 3/2 v j cap. ऐसे करो. So this is coefficient or friction. Hmm. So basically they ask tan theta, right? कुछ भी करो, आंसर ऑप्शंस आई एम गिविंग करो. On the videos for now. A bullet of mass this much moving horizontally with speed this much hits a wooden block of mass this much kept in horizontal rough surface. The bullets get embedded into the block and moves with a 20 meters before coming to rest. It is going. Okay. The coefficient of friction between the block and the surface is. So it's identified mu. So this is a perfectly inelastic collision. You can able to identify it. Yeah. So you get V as 100. So V as no. And T as 0.2. V wrong. So how is it wrong? Apply करो. So what is saying? Bullet of mass this much So is you moving get horizontal with speed. oh, it's an event. It's You a get wooden 10. block. 10 yes. 3.9 kg at 0.1 kg. A block it was kept at horizontal top surface. Okay. So the bullet embedded into it and the block moves with a 20 meters. So it क्या हुआ? ये दोनों bullet भी आ जाएगा इसमें and it went up to 20 Won't meters. it be 5? Answer हाँ? No, the velocity. No, velocity 5. देखो initial momentum is only for bullet only, right? Right? तो कितना होगा? 0.1 into 400 is equal to final momentum दोनों ऐड करने का right mass. So 0.1 plus into 0.1 plus 3.9 is how much? 4, right? So 4 into V. oh yeah. Because दोनों masses ऐड करेंगे. This is a perfectly inelastic collision. So V आ गया. So V got as इसका velocity T. we got as 10. Now he is telling 20 meters displacement दिया है. The coefficient of friction. So what done by friction? So you can't use S equal to half 80 square. Half 80 square. कितना है आंसर तुम? उसमें how you found coefficient of mu value? How you found? I want mu value, coefficient of friction between the block and the. So what is happening here? जो भी kinetic energy है, that is used as work done against friction. Okay, just equate kinetic energy total is equal to work done against friction. Okay, समझ. So kinetic energy of half into this small m bullet का mass plus wooden block का v square जो भी है that is equal to work done against friction. So work done against friction is F dot S, right? Force into displacement. Now use करो. Here it is कितना आएगा? Work done against friction, right? So minus निकाल दो इधर. Now solve and find mu.
So formula क्या होगा? Friction का Here, formula is mu 0.4. n, right? And n is equal to mg, m plus m into g into Oh, displacement. so 0.25. Answer, huh? Yeah. Very good. 0.25 answer. हाँ मानो, बोलो बंद करके क्या बैठेगा, करो. So half into small m plus capital M is 4, right? 4 into Sir, what v formula is that? See, the total kinetic, we can use work energy theorem, we can tell. देखो total kinetic energy which is wasted as the work done against friction, right? Total kinetic energy is wasted against work done as friction. So work done by all forces equal to changing kinetic energy. You can use that one. That means work energy theorem we can use. So total kinetic energy is how much? Half mv square, and that is wasted as work done against friction, right? So work done का formula is Fs, right? Yeah, against friction means minus निकाल दो. Otherwise देखो friction is acting like this, displacement is like this. Minus Fs, right? Minus निकाल दो बाद में, against friction का पूछ रहे हैं ना. So mu in mg. Sir, ये why can't we just use conservation of momentum first only? कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करेगा टेल में? M1 V1 is equals to M1 once again. इसमें फ्रिक्शन का म्यू वैल्यू चाहिए. म्यू Yeah, कैसे आएगा? we can use M1 V1 equals to M1 plus M2 into V, right? ओके, क्या तो Because क्या आएगा? both वेलोसिटी are आएगा colliding. Like from the by they're using coming the together. So you get 0.1 into 400 is equals to 4V. You get V. I mean, yeah, 0.1 into 400 is equals to 4V. You'll get VS 10. So v उसलिए लगाया, v आ गया कहाँ नहीं? Yeah, No then we question can करना. use V square minus U square equals to 2AS. You can use. You Tell the get answer. AS 2.5. Mu value is how much? Yeah, once again. Yeah, solve करो. अब नो कितना है? So 0.5. I got coefficient as 0.5 wrong. The substitute values, that's it. then I got 0.25. No, 0.25 is answer. Work done against friction is equal to the changing the kinetic energy, total kinetic energy. So देखो kinetic energy पूरा आके waste हो जा रहा है ना, किधर waste हो रहा है? Work done against friction. Just equate. So half mv square is 10 square is 100 is equal to mu times of 4 into 20. So कितना 4 cancel. So 20 5 जा. So mu is किधर आएगा? क्या mistake किया? Displacement is 20 meters on, right? ओके ठीक है. सो mm कैंसिल, राइट? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा? म्यू इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाय 2gs, राइट? ये ना, म्यू स्क्वेयर बाय 2gs. नाउ v स्क्वेयर इज हाउ मच? 10 स्क्वेयर 100 बाय 2 into 10 into displacement is 20, right? So कितना? So 10 twos 1 by 4. 1 by 4 is 0.25. This answer. So where है? Pranav? That's Yes, sir. Yeah.